Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing well. Welcome back to another live session. This one is about mock interviews in which I will be asking people to join me and they will be giving a live interview, very specific questions. The idea is to make people understand, to get them out of their comfort zone and to make them realize in real time, live, on how to ace their interviews based on my experience, obviously. This will be a very enlightening session for those who struggle with interviews and who want to ace in their career and who feel they're struggling because of not being able to clear this very important step, which is interviews and which is making an impression. So I'll give everyone at least 5 minutes so that they can join. For those who have joined us, if you can just mention here where you're from, what's your name, what are you looking for. Until then, मैं जिन लोगों के साथ live session करना है, I'm also in touch with them, so they will also join us. Before that, before the live session, before the mock interview, I would want to discuss some very important hacks when you're giving interviews. Um, Obviously, आप साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं and I'll be able to answer those. So it's very important that you understand giving interviews. Whenever you're giving interviews, hi Habibur Rahman, how are you? Where are you from, Habib? Do you work? Are you a student? Feel free to mention that. So it's very important when you're giving interviews that you understand how you have to be prepared, how the interview has to start, what your body language should be, whether it's verbal or non-verbal communication, how you have to answer certain questions, how well you have to be prepared, and what to expect from an interviewer, and how to handle questions in which you are not very sure. So, um, okay, Habib, you're from Lahore and working as an HR executive with retail industry. Okay, great. That's great. I'm also from HR. Great to connect with someone. If you have any specific questions about HR or interviewing skills, feel free to join. The first person who will join me to handle for this mock interview is already here. Junaid, मैं थोड़ा सा time लूँगा. I want to explain everyone the basics of interviews, especially जब आप भी हैं, so you should know how to answer the question and what to expect from this. I'll give a couple of minutes for people to join. So जैसे मैं कह रहा था, obviously there's this section जिसमें आपका introduction होता है, फिर आपका behavioral questions होते हैं. Um, there's a section which they ask you, why should we hire you? Hi Lukman Sheikh, how are you? Feel free to mention where you're from, what do you do? So in order to build a good connect, otherwise मैं सिर्फ screen और camera में देख रहा होता हूँ, I don't know. It's good to connect with the other person as well, apart from just a lens. And obviously the question and answer session in the end. So you have to be very careful and you have to be prepared well enough कि आप कॉन्फिडेंट हो कि जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछ लें या क्रॉस क्वेश्चन कर लें, हाउ यू विल बी आंसरिंग दोस, राइट? बिफोर दैट, बिफोर द इंटरव्यू, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू सपोज क्विकली अगर मैं आपको बता दूं, यू सपोज टू रिसर्च अबाउट द कंपनी, यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट द जेडी एंड व्हाट द कंपनी रिक्वायर्स, व्हाट द कंपनी इज डूइंग, कंपनी की डायरेक्शन किधर जा रही है, आपकी वैल्यूज़ और कंपनी की वैल्यूज़ कैसे सेट होती हैं. जेडी है तो आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो स्किल सेट है, वो किस तरह ऐड कर सकता है कंपनी में इफ़ यू ज्वाइन. सो इंटरव्यू एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, उसमें आपने एक इंप्रेशन बिल्ड करना होता है, बिकॉज दे आर जजिंग यू, राइट? अगर वो जज करते हुए आप ठीक तरह अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, यू विल हैव प्रॉब्लम्स ओवर दैट. सो दिस इज़ वेरी, मैंने डन हंड्रेड्स और मे बी थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़, एंड उसमें बहुत दफ़ा ये होता है, पीपल जब आपको ये रियलाइज़ होता है एज एन इंटरव्यूअर दैट दिस गाय इज़ ओवर हियर जस्ट टू गेट अ जॉब एंड डजंट केयर क्या काम है, उसकी वैल्यूज़ अलाइन होती है नहीं होती, कल्चर अलाइन होता है नहीं होता, इसकी कोई परवाह नहीं है. सो आपका एज एन इंटरव्यू ना, यू डोंट वांट दैट पर्सन इन द कंपनी एंड यू लूज आउट, इवन दो आपकी क्रेडेंशियल्स ग्रेट होंगे, बट यू विल बी टर्म्ड एज अ कल्चरल मिसफिट. ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू, राइट? एंड you have to be there at the interview at least half an hour before. आप ये chances मत लें
कि हम लास्ट मोमेंट पे जाएंगे. अ मैच्योर पर्सन विल नेवर बी लेट अनलेस ऑब्वियसली कोई क्राइसिस हो, बट दैट इज़ लाइक उसके चांसेस लेस देन 5% होते हैं एवरी टाइम. बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी मैच्योर. वहाँ पे पहुँचे, यू हैव टू बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड. यू शुड नो कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उधर की ड्रेसिंग या उधर के. फॉर मी, आई विल ऑलवेज ड्रेस फॉर्मली. I have to be sure I won't take any risk. So formally for men can be sometimes it can be shalwar kameez as well, well ironed shalwar kameez, but mostly it's Western attire, which is dress shirt and pant, and mostly a jacket or a suit as well. For females, obviously, our local attire, a formal attire, which is shalwar kameez, or if you're comfortable, then a Western dress pant and dress shirt as well, depending how the company's culture is and where you're going. So, for why do I mention that? Because banks mein agar aap ja rahe hain, so you can't go in a polo shirt and jeans. Probably you will have to wear a suit, right? But अगर आप एक tech company जा रहे हैं, so you can get away with a dress shirt or a dress pant. I would not recommend a t-shirt and jeans. First impression जो है ना, आप थोड़ा formal दें, अपने best attire में दें. ठीक है. ये सारा जब बैकग्राउंड हो गया तो फिर आप एंटर होते हैं इंटरव्यू में. अब इंटरव्यू में क्या होता है, वो इंट्रो, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज़ द इंट्रो दैट यू गिव. मेरा ख्याल से शुरू के 2-3 मिनट में आप डिसाइड करते हैं, इंटरव्यू डिसाइड करते हैं क्या शुड आई प्रोसीड विद दिस पर्सन और नॉट. और फिर उसके बाद आप बिहेवियरल क्वेश्चन में जाते हैं जस्ट टू गेज हाउ द पर्सन विल रिएक्ट. और फिर आप जाते हैं उस पर कि वाई शुड वी हायर यू, एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर. इसके बीच में ऑब्वियसली द इंटरव्यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चन. सो विद दैट context in mind, I'll move on. Habibur Rahman is saying, I want to switch from the retail industry, and which industry do you prefer? Habib, यार किसी भी इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं. HR की बेस्ट बात यह है कि यू कैन जॉइन एनी इंडस्ट्री एज लॉन्ग एज यूर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड अगर आप सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जा रहे हैं, सो योर सॉफ्ट स्किल्स एंड योर लीडरशिप एंड योर मैनेजमेंट स्किल्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. सो एज लॉन्ग एज टेक्निकली आप साउंड हैं, और अगेन जहाँ भी आप जाएंगे इंटरव्यू में आपको इम्प्रेस करना है, एंड इम्प्रेस करने के लिए आपको एक सर्टन हैक्स हैं जो अगर आप कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा. Lukman from Karachi and working as project engineer in construction company. Great to meet you, Lukman. Virtually, I'm willing to get a job in Middle East, which is the best possible way to get. यार देखें, Middle East का तो obviously first you have to get, उसका एक separate section है मेरे YouTube channel पे about how to get the right resume and how to get selected for the interview. And जब interviews की बात आती है उसमें आप ये session attend करेंगे, so you will obviously get to know. Mazari Temur is also, how should we tackle the situation if you're not sure about the answer? बिल्कुल मैं इस पे आता हूँ. Normally Temur, before I move on to Junaid, ये नॉर्मली सिचुएशन तब होती है व्हेन यू आर नॉट श्योर, व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. जब आप श्योर होते हैं ना कि पूछना क्या है, एंड आप झूठ नहीं बोल रहे होते, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं, और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होती है कि मुझे इंप्रेस कैसे करना है, तो फिर आप, एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, यू नॉट श्योर. और अगर बहुत ऐसी कोई सिचुएशन है, क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें you're actually not sure के behavioral question ऐसा पूछा है, मेरे पास example नहीं आ रहा, you can always take a minute and you like, I would like to think for 30 seconds or a minute if you don't mind. So the interviewers will be fine as long as when you start you hit the nail in the head and आप ऐसा आंसर दें कि वो impress हो जाए. ठीक है. With that, I will start with Junaid. So the format is that मैं direct इनसे question पूछूंगा and I would expect an answer. I'll just add you, Junaid, to the session. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक. We haven't met before, but या doesn't matter as long as we're meeting now. कहाँ पर या होते सो हैं आप? Can you give a brief intro about yourself? first of all, thank you so much for inviting me to this mock interview session. I've been waiting for this like since the past week. So I'm based in Karachi. I have just recently graduated from Zabist, and I've done my bachelor's in business administration, and my major is in human resource management. So if I'm talking about my most recent role, I was Okay, working. okay. Sorry, man, I will just stop you. I think वो question मैं आपके पास आता हूँ. You will start with the question. I just wanted an intro. कि आप, where you from, so the people have an idea. So thank you so much for joining me. You're from Karachi, Okay. and you're joining us for this. I understand that you're not. You a student right now, or this is your first job that you're looking for right now? Are you Um, already working? I Yeah, so I was already working. So let me just tell you about my most like recent role. So I was working in Kareem in their global talent acquisition teams as Okay. a senior talent sourcing associate. But due to Okay. the recent like restructuring, or you can say like a mini downsizing, I got laid off. So I'm No currently problem. looking for a job at the moment. ठीक है. Great.
सो ग्रेट यार जुनेद, you've already had a great start. So मैं डायरेक्ट उस पे आता हूँ. I don't want to मैं end में we will reflect on how the session was, how the All right. question was and how you answered. ठीक है. So with that I start. So thank you Junaid for joining us. Can you walk me through your resume or give a brief intro about yourself? All right, so my name is Shunaid. I am based in Karachi, and I've just finished my graduation from Zabis. I was doing my bachelor's in business administration, and my major was in human resource management. My most recent role was in Kareem, in which I was a part of the global talent acquisition team, in which I was working as a senior talent sourcing associate. So basically, I was working over here for 3 months, and basically, I was handling the food and the grocery vertical along with my line manager. If I move back to my role from Kareem, I was working in 10 Pearls in the learning and development domain, where I was working as a learning and development coordinator, you can say. I started as an intern, but then I got promoted to an associate, and from there I moved to Kareem. Before that, I was working in Colgate Palmolive, in which I was hired for a project. So, in short, the project was a salary survey project for the sales department because they were facing a high attrition rate. So basically, they wanted to conduct a survey of all the interview of all their competitors in order to understand where they're currently standing in the market, and in order to like they told me to do a sort of like an analysis and then compare where were the weaknesses in their comp and bench structure. And before that, I had a couple of internships in Lucky Motor Corporation in Mulder and Phipps, in which I was working in the overall HR domain, and I was working in Tech Rebel as well. So this is my complete walkthrough, and my hobbies include that I travel a lot and I do jujitsu as well. So I've just recently started jujitsu, so it has been just a month. So this is my complete overview. Thank you, Junaid. I think I'm quite impressed. I'll jump to the reflection part. So I think आपने background और जो introduction दिया, that was for me at least, and people can comment on it as well. I think that was great because you didn't hesitate. You were very sure about what you wanted to share. It wasn't like that you were thinking कि अब क्या Mhm. बोलूँ क्या ना बोलूँ. So it gives a very strong impression. मैं as an HR person who's been in the industry for around 10 years, so I'm saying this from my experience. Yeah, this is a good start. Um, you mentioned about your hobbies, great. You mentioned about your experiences. You started with your education. That was great. Um, what you can do better, जो मैं करता अगर मैं आपकी जगह होता, what I try to do is I won't start with my name is Junaid because it's already evident, Yeah, right? It's already I have the resume. But I have also done this quite a few times. You know when it yeah, happens, when you just like अच्छा यार how do I start? And मैंने तो ये सोचा नहीं था कि what will I start with. So आप you don't want to have a gap over there and you want to say something and you're like अच्छा यार let's add a filler. So subconsciously वो filler क्या आता है? Okay, my name is this, and I've done this a lot of times, even with like yeah, 4 to 5 years of experience. So ये एक चीज थी, maybe you can just start off with and you can start off with something catchy. So what I do is whenever I've given interviews, I start with I'm an explorer. I am fascinated by things and I try to explore not just professionally but personally. एकदम से माइंड में आता है, क्या बोल रहा है एक्सप्लोरर, क्या नहीं तो मैं तो वेट कर रहा था ये अपना कुछ एजुकेशन, दैट इज कैची. सो yeah, दिस इज अ ट्रिक दैट आई यूज. सेकेंडली, एजुकेशन का आपने बताया. व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई डू इज मे बी अ हाईलाइट अबाउट व्हाट यू डिड व्हाइल यू वर स्टडीइंग. सो आपने बताया आप कहाँ से हैं, which is great. If your GPA is great, you can mention it. There's nothing to hide about it. मेरी GPA yeah, इतनी अच्छी नहीं थी, but मेरा OA levels में गोल्ड मेडलिस्ट में था. And I proudly say it because मैं इंटरव्यूअर के माइंड में ना, इंटरव्यूअर भी सोच रहा होता है यार मैं क्या चीज़ें पिक करूँ. और आप ना कीवर्ड्स बेसिकली वो जिस तरह इंटरनेट में SEO नहीं होता, सर्च इंजन yeah, ऑप्टिमाइजेशन, आप कीवर्ड्स फेंक रहे होते हो कि यार गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छा ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 10 A's 5 A's GPA, और फिर उसके बाद आप बोलो यार मैं इस सोसाइटी में था. मे बी यू कैन ऐड दैट इफ यू वर पार्ट ऑफ yeah, सोसाइटी एंड इफ यू डिड were at a leadership level. That is something yeah, you can add. So very briefly, okay, I was in Zappist, and while being there, I managed this, handling a team of 10 people, getting this much sponsorship, etc., etc. जो भी है. So you can think of that. Thirdly, what I would recommend for interviews,
थोड़ा सा यू कैन मे बी शायद मेरी स्क्रीन में थोड़ा शॉर्टन आ रहा है फ्रेम, बट यू कैन ऐड योर Um, शोल्डर्स. yeah, yeah. The screen is या short. The screen is स्क्रीन basically short. शॉट, Like ओके, even आई if थिंक, I like, या लाइक yeah, दिस. इससे होता ये है कि योर व्हेन योर बॉडी मूव्स और योर बॉडी लैंग्वेज ना, दैट गिव्स बेसिकली आपकी बॉडी से कॉन्फिडेंस हो रहा, स्पार्क हो रहा होता है. एक तो आपकी फेस से हो रहा है, एक्सप्रेशन से हो yeah, रहा है, बट एक बॉडी yeah, से आपका हो रहा था लाइक यू आर इन कंट्रोल. दिस इज व्हाट दिस इज द फीडबैक दैट आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि यार यू नीड टू, आपका जो फ्रेम है ना, अगर वर्चुअली आप इंटरव्यू दे रहे हो, इट हैज टू बी yeah, क्लियर बिकॉज इट गिव्स एन इम्प्रेशन. exactly. ठीक है, फिर आपका की अचीवमेंट वाला गया. अब आपने मेंशन किया दैट यू वर्कड इन करीम, व्हिच इज ग्रेट, इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू वर्कड इन एचआर, एंड यू मेंशन कि आपने क्या पोर्टफोलियो पे Yeah, काम किया. व्हाट आई वुड हैव डन इज आई वुड हैव पिक्ड माय बेस्ट प्रोजेक्ट जो कि आपने मेंशन किया, बट यू डिडंट टॉक इन नंबर्स as far as I can recall. So by numbers, I mean, so if you were doing a component project, you should have mentioned yeah, how many people were involved, how many companies were involved, what was the difference that you created, what was the impact that it had. yeah, आपने mention किया, I think कि उसका role क्या था, but you have to mention, always describe the action, describe the project, but yeah, always mention कि आपका role क्या था और उसका impact क्या था company में, and always talk in numbers, yeah, percentages, numbers, bottom line, GMV, whatever. Always link it to, if you can link it to the GMV or bottom line or something, तो वो आपका एक बिजनेस acumen वाला माइंड देता है. ठीक है, आप एचआर में हो, बट यू आर सो, योर बिजनेस acumen और योर जनरल acumen इज सो गुड दैट आपको जनरल उसकी नॉलेज भी है. तो देख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप शुरू के 2 मिनट में कितना दूसरे के माइंड में डाल सकते हैं कि यार दिस पर्सन सीम्स कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस, बिकॉज ये बातें जो कर रहा है ना, ये तो एक सीनियर बंदा करता है इस तरह. ठीक है, इवन दो आपका एक्सपीरियंस कम हो सकता है, बट द वे yeah. यू कम्युनिकेट इट, दैट्स द मेन थिंग. एक और चीज़ आपने हॉबीज़ की है, बहुत अच्छी चीज़ की, बहुत लोग ये मिस कर जाते हैं. एंड ये आपने एंड में की, वो भी ठीक चीज़ है. इफ़ यू वांट, यू कैन ऐड समथिंग अबाउट योर फैमिली, बट दैट्स आल्सो फाइन. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट. फैमिली से सिर्फ ये होता है. स्किल्स अगर आप मेंशन और कर दें, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर योर स्किल्स. आपने जॉब मेंशन कर दी. सो फॉर मी, आई एम अ सर्टिफाइड जॉब इवैल्यूएटर, आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर. मैंने कोर्सेज और स्किल, मेरा पावर बीआई में आई एम सर्टिफाइड, थिंग्स लाइक दीज. Yeah, मैं वो चीज़ें मेंशन करूँगा जो जेडी में रिक्वायर्ड है, नॉट लाइक पूरी ज़िंदगी में मैंने क्या किया. सो फॉर एग्जांपल, इफ द जेडी रिक्वायर्स, probably you will apply for an HR role somewhere down the line. So if you will know कि यार इस HR role में they might need these kind of trainings, leadership की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है. So you can mention that. So overall, it's a 7 on 10. But if you want more impact, just talk in numbers. एंड yeah. ये जो मैंने आपको छोटी चीज़ें बताई ना, कि अपनी एजुकेशन में आपका क्या अचीवमेंट है, बिकॉज आप, हाउ, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव, अ कपल ऑफ इयर्स और अ ईयर? I would say like, are you counting? Do you count internships as experience? Because like, नो. I just want to add like 2 minutes. So you were mentioning about my university achievement. So I was like, I would say an average, I would say a decent student. So my entire university life, I would say I was like working in like companies. I was doing internships. I was managing my ग्रेट. studies as well. I had a ग्रेट. decent GPA of 3.4. I wasn't part of any societies or any sort of like the student council, because for me personally, it was like not adding any sort of value to me, ओके. to my personal like any such thing. So I was working throughout my university life, and honestly, if talking about like numbers, if for Kareem, uh, I was part of Kareem for like 3 months. So I didn't want to like lie to you or make up any sort of numbers. Like if I want to like mention about like one of my achievement over there, that was like I was able to close like 5 to 6 positions during my 3 month time frame, but that I wouldn't count like as a very big achievement for myself. So ओके. that was something I wanted to be like really honest with you. So that's why I went with that. ओके. व्हाट आई वुड रेकमेंड कि अगर आपका 3 मंथ का भी स्टेंट है ना, सो व्हाट, Yeah, always look at the best thing that you have done at a place and focus on that. Because probably you'll be applying for an HR role, and any experience that you mention, वो ठीक है, आप वहाँ पर थे, बट द अदर पर्सन विल ओनली रिमेंबर कि यार इसने किया क्या था, व्हाट वैल्यू डिड द पर्सन ऐड, एंड देयर इज अ exactly. पॉसिबिलिटी कि वो आपकी सीवी साइड पे करे, वो कहे यार अच्छा यू मेंशन दिस, नाउ प्लीज टॉक अबाउट दिस, क्या किया था आपने, हाउ डिड यू डू इट. एक तो Right. ये चीज़. सेकंड चीज़, आपने जो बात की ना, hobby, उसकी, during your university years you were working, that's a great thing, that's not something to be shy of. Internships, great. What did you, again the same thing, internship में क्या achievement थी,
भले छोटी हो यार अचीवमेंट, इज द वे यू कम्युनिकेट इट. सो Yeah, लाइक इंटर्नशिप पे कोई प्रोजेक्ट तो किया होगा, अगर प्रोजेक्ट किया था तो उसका इम्पैक्ट क्या था, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ इट. यंग प्रोफेशनल के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 5% इंक्रीज कर दी. दैट्स नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि आपका एक्यूमेन और एटीट्यूड कैसा है, कि यार ये exactly. बंदा तो बस लगा हुआ है, दिस पर्सन वांट्स टू डू दिस पर्सन वांट्स टू डू दैट. दिस इज यंग प्रोफेशनल के लिए ना, ये ट्रेनिंग के लिए जब आप हायर कर रहे हो तो ये चीज़ आप देख लो. ऑल्सो वन मोर थिंग मैंने लिखी हुई थी, ऑलवेज, सो दिस इज हाउ आई थिंक. लोग शायद डिफरेंट वो सोच सकते हैं, आपका भी, आप भी एचआर में आपका भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. बैकग्राउंड कोशिश करें बहुत सोबर रखें, और जस्ट चेंज द बैकग्राउंड टू समथिंग. और इस पे ये बैकग्राउंड आते भी हैं इस पे, आई डोंट नो, आई हैव नेवर पुट इट. जूम पर तो होते हैं, लाइक अ वेरी any background that you can put. Yeah, So either zoom in. Yeah, have the wall towards your back. इससे होता ये है कि दूसरा जो इंटरव्यू है ना, उसकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती. सो फॉर मी इट्स फाइन, आई yeah, बी. बट आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू. सो दिस इज दीज आर सम थिंग्स दैट. एंड जब भी आप इंटरव्यू दें, जस्ट मेक श्योर दैट द लाइट ऑन योर फेस is always there, because I don't want to. yeah, I'll be fine with it. Like, I'm not saying these are the very specific things जो हर interview देख रहा होता है. It's just that it gives virtually जब आप दे रहे होते हैं ना, there are a lot of things that the interviewer can miss. तो ये yeah, चीज़ों में ना आप थोड़ा सा ace them. That's a very basic feedback, but that just creates an impression. So yeah. this is how I feel. If you have any points, please आप भी बताएं. Yeah, thank you so much for providing me your feedback. So I think you were like really honest with me. I really appreciate your honest feedback. Um, um, I would like to thank you for like taking this mock interview session, and I would like to stay in touch with you as well. श्योर यार जुनेद, लिंक्डइन पे अगेन मुझे तो मेड अ लॉट ऑफ Yeah, कनेक्शंस I लिंक्डइन. sent you a connection request, but I sent नाउ you a आई ऐड connection यू. request, but नाउ I आई think ऐड नाउ yeah, नाउ I आई sent you ऐड a यू. connection request, and I just have one request. I'm actively looking for an opportunity in the HRBP, as in in the HRBP or in the talent acquisition domain. So if there are any professionals or if they want to reach out to me, I am actively looking for opportunities, and I would love to have a discussion with them. That's the only thing that I would like to say over here. यार, I really like your honesty and really like that you're making an effort. A lot of people, they Yeah, won't even show up, especially जो HR में होते हैं ना, उनका mindset ये होता है, why do we need to listen or why do we need to participate. So I really like your attitude. And अगर इधर से this video will obviously be there on LinkedIn and YouTube, so people will see afterwards as well. अगर मेरे yeah, पास डेफिनेटली होते, नेक्स्ट वीक आई एम डूइंग वर्चुअल जॉब फेयर. उसका पॉइंट ये yeah, है कि मैं सारी जॉब्स एक जगह इकट्ठी कर लूँ, एंड आई जस्ट yeah, रिलीज वीडियो में भी, आई गिव सम गाइडलाइंस के जॉब इंटरव्यू कैसे देना, बट आई रिलीज अ पीडीएफ एज वेल, कि yeah, जिसको देखना है जाके देखे, अप्लाई कर ले. बिकॉज एक सबसे बड़ा मसला ये कि जॉब का पता ही नहीं होता. ये रिक्रूटर्स को भी मैंने बोला हुआ है कंपनीज के. So definitely, yeah, good luck, and thank you once again. And I'm sure with the passion that you have, and how you started and how you did your intro. आपने देखा होगा Yumna is here. She also mentioned that that was a great start. Um, yeah, and obviously there'll be other people जो अभी LinkedIn पे comment कर रहे होंगे, so you can see that. And कोशिश ये करें कि LinkedIn पे जाके whoever comments, if you see any HR people, if you see any recruiters, just connect with them yeah, and yeah. I introduce connect with yourself. them. I yeah, It's a bit difficult, but eventually you'll find a position. Eventually you'll find someone who understands, who's also looking for a reliable resource, right? So yeah. you will find that job, inshallah. ठीक है. Yeah, yeah. Thank you so much. Thank you so much चले. for your feedback and for giving out your valuable time. Thank you, and thank No you problem. everyone in the comment section Always, for always their available. feedback. All right. Always available. No problem. चले. Yeah, so that was Junaid, and I think that was a great mock intro session. If anyone has any feedback, any comments, thanks Yumna for your comment. Tareem Sultan has joined us from Manchester. Hello, and Tareem, if you can just write something where you're from. You've already written you're from Manchester, but what do you do? Are you a student? Are you working? What are you looking for? That would also be great. That would help people to network and to communicate. ठीक. Any comments or any feedback on the intro
the mock intro that we just had. We can discuss that. I have another mock session that would focus on behavioral questions. So behavioral questions क्या होते हैं? What is the purpose of it? सो इंटरव्यूज ट्राई टू असेस यू. कम टाइम होता है ना, कम टाइम में आपको एक बंदा हायर करना है, अपने घर पे लाना है, घर मतलब कंपनी. सो इस तरह तो नहीं लाना. लाइक यू हैव टू असेस हाउ डज द पर्सन रिएक्ट, व्हाट इज द बिहेवियर लाइक, इसको ये चीज़ की हुई है नहीं की हुई. सीवी पे तो यू ऑब्वियसली समटाइम्स पीपल राइट स्टफ दैट इज नॉट ट्रू और इज ब्लोटेड. सो यू नीड टू बी वेरी श्योर. तो तब आते हैं बिहेवियर क्वेश्चन. तो बिहेवियर क्वेश्चन क्या है? लॉट ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो, बट बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं describe a situation in which, for example, you have handled crisis management. Describe a situation in which you manage a team and a project and discuss about it. Describe a situation in which you showed adaptability. Describe a situation in which you showed teamwork. बहुत simple questions लगते हैं, but they can be very tricky to answer, and it takes a bit of an experience to answer them, to handle them. So behavioral questions जब भी होते हैं, and a lot of people get stuck because they're like, we don't have relevant examples. क्या बोलें, किस तरह बोलें, गलत चीज़ तो नहीं बोल सकते, गलत चीज़ बोलेंगे तो क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम फंस जाएंगे. And you know, once you get stuck, you start sweating और हाथ हिलने लग जाते हैं, and you just like, यार अभी भागो यहाँ से जितना जल्दी निकल सकते हो. So that is a situation that you want to avoid, right? So behavioral questions में simple है, जो अभी मैं जुनेद को भी बता रहा था. Always focus on the action that you took, situation जो भी बात हुई है, and then move to situation that you explained, and then the action that you did, and move on to the impact that it created, and talk in numbers. At least this is what I follow, and obviously there can be numerous techniques, and this is not something that I developed. It's something that I also learned, but with experience I realized कि यार अगर मैं इस पे भी focus कर लूँ, because attention span interviewer का ना बहुत कम होता है. मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज कर रहा होता है, उसके मूड पे भी होता है, काम भी होता है ऑफिस का. यू नो, इन दैट स्पेस दैट पर्सन हैज टू बी वेरी अनबायस्ड, वेरी एथिकल इन डिसाइडिंग हु टू हायर, राइट? सो उस सिचुएशन में यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू आंसर appropriately, and this is how it should go. If any one of you who is live, any behavioral question that you feel कि मुझे इसका बता दें कि how to answer, or any situation that you have been at in which you couldn't answer, yeah, you were stuck, so please feel free to mention that. This is the right time. I can answer your questions, inshallah, in your next interview. Hopefully it might be of help. Thanks, Imran, for the comment. Thank you. I know I'm infrequent. I think ये mock interview session में 2-2.5 साल बात कर रहा हूँ. But in my schedule, I am trying to make sure that I can incorporate more of this. So Habibur Rahman says, how long is our elevator pitch, and whether we start from a most recent professional role or start with education and so on. So elevator pitch जिसको आप intro बोल रहे हैं, it depends यार. I'm not saying it's written in stone कि आपने education से start करना है. If you're not proud or if you don't want to talk about it, don't. I would say do, but वो CV पे भी लिखा हुआ होता है. I do because I think my education, if I can add something कि मैंने education में क्या किया, that would create an impact. But at the same time, it also depends. If you have like 5-10 years of experience, you probably want to jump directly to the experience that you have, and what did you do, and what is the value that you added. देखिए, मेन पॉइंट ये है कि दूसरे का अटेंशन ग्रैब करनी है आपने, और दूसरे को आपने ऐसे पॉइंटर्स और ऐसे कीवर्ड्स बोलने सो दैट द पर्सन रीचेस आउट एंड द पर्सन क्रॉस क्वेश्चंस, और ये पर्सन के सामने एक इंप्रेशन बने. That is the main thing. So it's up to you. अगर education is not something that you want to focus on, just quickly mention it. तो education से ना आपका एक background, एक perception build होना शुरू होता है, and you can mention what courses you've done or what was your biggest achievement while being at a university. But like Junaid mentioned, he wasn't part of any societies per se, but he was working. So I told him कि आप अपने जो the internships that you did and the work that you did, make it your strength, use it as your strength, and talk about it.
because that's a big thing. If you've already started working, तो आप एक professional environment में you're used to it, corporate culture में, and then you can talk about it. ठीक है. और या सो बिहेवियर में जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट, टीम वर्क. ट्राई के जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज गूगल इट. इट्स नॉट समथिंग जो रेडिली इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है. यू कैन ऑलवेज गूगल इट एंड यू कैन फाइंड आउट कि यार ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड व्हाट सिचुएशन वुड आई पिक फ्रॉम माय करियर. एक और चीज़ होती है, पीपल से व्हाट एग्जांपल्स डू आई नीड टू गिव. Should it be from my university years? Should it be from my professional experience? It depends on you what you can share. जब मैं एक student था, या like I had 1 or 2 years of experience, I used to mention about the work that I did while I was in my university, right? But अब अगर हो या recently when last जब मैंने when I changed my company, I mentioned about the work that I did while working at Engro and the projects that I did. And trust me, आज भी मुझे लगता है कि वो जो projects मैंने mention timely किए, that was something that struck a chord with the recruitment team and with the hiring manager, because that was the work that was needed in the JD. That was a requirement of an HRBP role. So again, I had an awareness of what the requirement was. I had just had to ensure कि जो मेरा experience relevant है, I mentioned that and I talk mostly about it. But drive आपने करना है. और स्पेशली अगर इंटरव्यूअर शुरू में आपसे पूछ ले कि यार बताएं ना, थोड़ा सा इंट्रो दें या वो करें, देन द बॉल इज इन योर कोर्ट. आपके पास फुल, आप ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो. हाय आरिस, हाउ आर यू? Okay, so someone has mentioned, what if we are having anxiety issues? Very, very important question. Thank you for highlighting it. देखिए, it's anxiety is something that is natural and you have to first accept it कि यार ये होता है, and that is completely fine. You don't need to think यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. Everyone goes through it. How to handle it? एक तो आपको एंजाइटी क्यों होती है, एंजाइटी होती है व्हेन यू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड यू थिंक अबाउट क्या होगा एंड यू फील स्ट्रेसफुल अबाउट इट, राइट? एटलीस्ट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है. ये क्यों होता है? व्हेन यू मैंने हाउ आई फील इज, जब आप में कॉन्फिडेंस कम होता है कि यार हाउ विल आई हैंडल द सिचुएशन, आई डोंट नो व्हाट विल दे आस्क, कैसी सिचुएशन होगी, कुछ ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगी, मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, क्या व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड, फिर मेरा करियर का क्या हो. यार अल्लाह, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज बिलीव इन के यार इन अ हायर बीइंग, और एटलीस्ट इन कि यार हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. आप अपना बेस्ट दोगे, इफ द स्टार्स अलाइन, इफ द सिचुएशन इज इन योर फेवर. मैं तो बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं वो कंपनी आपके लिए बेस्ट कंपनी हो काम करने के लिए. बी थैंकफुल अगर वो नहीं हुआ कंपनी में, कोई बात नहीं यार. बट द बेस्ट वे टू गेट ओवर दिस एंजाइटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी प्रिपेयर्ड, एंड सेकेंडली प्रिपेयर्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये जो चीज़ पूछेंगे मुझे पता है, मैं तो अपने करियर से रिलेटेड बोल रहा हूँ. एंड सेकेंडली, जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ थे, जिस तरह बोलते हैं ना कि इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश ऑब्वियसली जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छी आएगी. अगर बोलेंगे ही नहीं और बुक से पढ़ते रहेंगे ग्रामर, तो बोलने में स्पोकन इंग्लिश तो यू कैन नॉट इम्प्रूव ऑन, राइट? पब्लिक स्पीकिंग करनी है अच्छी. पब्लिक स्पीकिंग अगर आप टाइप करके तो नहीं होगी ना, पब्लिक स्पीकिंग बोलने से होगी. फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट में थोड़ा सा आप वो करेंगे, बट 21st अटेम्प्ट में जाके आप you will improve and you'll feel confident. You won't care about कि मैं कैसे, because you will be used to it कि मैंने ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे इनंसिएट करना है, स्माइल रखनी है, आई कॉन्टैक्ट रखना है, बॉडी लैंग्वेज ठीक रखना है. एंड these are very basic things, बट इस पे आपका इंप्रेशन बनता है. ठीक है. सो किसका क्वेश्चन था? या चिल आउट का. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, बट आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस जितना ज़्यादा लें इंटरव्यूज़ का. इसी वजह से मैंने सेशन भी रखा कि जिसको ये फील होता है या कोई अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, फील फ्री टू ज्वाइन एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस ओवर देयर. So Tuba has asked. So Danish has joined. I'll ask. Danish is another volunteer. He wanted to participate in the mock interview, and
I'll just go to him. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया theoretically, I'll do a practical as well. और फिर आपको थोड़ा बेहतर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी. तब तक जो कमेंट्स हैं तो वह appreciation on the constructive feedback that you're giving. Okay, thank you so much. Um, Junaid, CV format, there's no perfect format, but yes, there are some formats. मैंने अपने चैनल पे सारा डिटेल में पूरा शेयर किया हुआ है. If you want that format, आप separately reach out भी कर सकते हैं. I can give it to you. But format कोई perfect नहीं होता. It's just that how you mention your skills and your experience. That is what is the most. That's what is important. ठीक है. So with that, Danish, if you're ready, I'll take you on screen and then I can ask you the relevant question. ठीक है. Assalamu alaikum, Danish. How are you? Walaikum salam. How are you? I'm good. I'm good. How's everything? Yeah, क्या चल everything रहा is है? fine. Yeah, doing logistics is not an easy job, and Oh, बिल्कुल logistics easy. and supply chain works 24/7. So I'm looking after logistics. So yeah, अच्छा, are you based in Karachi? yeah, I'm based in Karachi right now. ठीक है. And have you always been in Karachi? Have you always been in logistics, corporate Yeah, में? What's your so experience so like? I previously I was working for Daraz. So I worked for Daraz for 7.5 years. Oh, So in mashallah. that, so yeah, from the beginning I was there. So I have seen many phases. Like I was initially looking after vendor operations over there. So vendor operation was looking after the order fulfillment of marketplace merchants, and the RAS was 95% at that time was a marketplace company. So from that time, I'm looking after operations. So when initially I was looking after vendor operations from a team from a team of two people. I built a team of 45 people all over Pakistan who were looking after 10,000 plus merchants. Oh, nice. Yeah, so marketplace merchants. Then during those tenure, I did some major projects for the RAS, which includes the RAS footprints all over Pakistan. ठीक, मैं सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ. आई जंप स्ट्रेट टू द क्वेश्चन. आप आई Yeah, थिंक yeah, उससे रिलेटेड ही है ये. yeah, सो yeah. फॉर बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग, मैं आपसे क्वेश्चन जो है व्हिच आई वाज एक्सप्लेनिंग टू पीपल एज वेल, Mm-hmm. द viewers that are here and जो बाद में भी होंगे, so for understanding please listen to what how Danish answers. We will obviously reflect on it, and then Mm-hmm. obviously if you have any questions from Danish or from generally, you can ask. So Danish, consider yourself in the interview, and if I wanted to ask you, I would ask, describe a situation in which you had to lead a team Mm-hmm. and any project that you led successfully with that team. With that team, so again, I will break my experience in your question and my answer into two different parts. So for first part, leading a team, which I feel was very interesting. There was 11/11 campaign back in 2021, and we had a expected load of 2.5x, which we forecasted as 2.2, and we get 0.5x more order volumes because of more better response from the customers. So on that day, what other operations head did, they made a shift of, instead of asking people to work for 12 hours, they pushed people to work for 16 hours. And as a consequence of that, people didn't showed up next day for doing operations. So at that time, I taken initiative because I had a team of logistics marketplace who knows the same, who used to work for the same system, use on the same system which operations were using. So we had the knowledge, we had the expertise over that software. So I get on the floor because there was no one on the floor for doing operations. So I get on the floor with my team. Initially, we were three people over there. Then other department people also came because my team knows the software. So we start leading those people as well, and we became small leaders. So my team became a supervisor kind of people who were coaching them how to do operation, and they were monitoring them. So on that day, my team, with the support of again the other team members and other floor people over there, even my CEO was also doing operations at that time.
because we had to process the order. We can't stop the operation cycle, and if an operation cycle stops, it creates a big impact, big bullwhip impact over the operation. So we can't afford this. And again, my stake was also over there, because it was sorting operation which was choked. And if sorting operation got choked, then my LMP partner won't be getting orders. And I have prepared them that they will get the orders day by day. They were day by day forecasting for them. So at that time, this was very interesting for me to let a team which don't know how to do the operations. It was me and my 3 to 4 team members who knew how to operate on system, how to create feedback, what was the system protocol, and we ran the whole shift. And at that time, we processed 20,000 orders in 7 hours to run the cycle, and that was something very interesting. And I'm really proud at that moment. So it's a short thing. I led big teams, I led big departments, I led small departments as well. So that particular event, I really feel appreciated, and I really enjoyed that moment. So we did the same exercise for the next 3 days as well. So I had to be on the sorting floor from morning 11 till 7 at 7. But it was a great experience for me leading the team again. Then, for the second part of your question, a project. So, during my tenure, and even currently, I'm working as a head of logistics, having 3,000 plus employees in our company, including riders and other stuff. So, it's a more of a startup. So, right now, the projects are not that much structured as compared to the project which I used to do in Daraz. So, in Daraz, I did a project called Logistics Marketplace, which really create an impact in the industry. It was a very new concept, because even my head wasn't confident about this. So back in 2018, I was fed up of doing vendor operations. So I had a team. It was on auto mode, so everything was smooth. I had to work 3 to 4 hours a day just to attend meetings, and then I was free at that time. So I asked my manager, like, I am done with it. Team is ready, manager is ready, who will look after the whole operations of vendor operation, and I need to do a new project. So they said there's a bit uncertain project with us. We don't know how it will turn. It's a concept of logistics marketplace, where you will be building small 3PL partners all across Pakistan, and those people won't be people who had the experience of logistics. So they would be only investors who will be willing to do something in those small cities, and they would be locals. Like in Rahim Yar Khan, he should be a Rahim Yar Khan local. Plus, he shouldn't be having a logistics experience as well. He shouldn't be belonging to Leopard. He should not belong to TCS. He should not belong to any other 3PL company. So that is the most interesting project. So when I initiated the project, so I was the only one in the team, and I was the head of logistics marketplace. And under me, I was an intern from IBA, which later on become a LMP associate with us. So I usually I went to Rahim Yar Khan one day by road, and I was convincing people, like, sir, you need to invest 1 lakh, 1.5 lakh. This is the count of orders you will get. This is the model you will get. This is how you will turn your business up. This is how it will turn out. The packages will grow in future. But again, it was a very difficult thing. I have to search distributors, because distributors are very much relatable to logistics as well. So I searched distributors. So I found a medical distributor in Namir Khan, which somehow convinced. But again, my first LLP partner was from Multan, and he was an ex Daraz employee who was also searching for the job. So he called me, Danish bhai, I want a job. So I said, where do you live? He said, I live near DG Khan. So I said, I have an opportunity for you, business opportunity. Even if you have to finance you, I will finance you on this. And I was offering this from my own pocket, because I had to get the project run. So then I convinced him, and now he is making more money than what I am drawing from my current position. He is an LMP partner in 8 cities. We have LMP partners all over Pakistan.
which are 50 in 52 cities. When I left Daraz, we had 24 LMP partners. It is running, so we started from Pakistan. Now LMP partners are in Bangladesh, are in Nepal, are in Sri Lanka, are in Myanmar. So we this project ran all across Pakistan. I trained all the regional teams how to select partners, how to train them. I shared them content, training materials for the partners. The software which we were using, their training material, the training material which can be used, which should be used for training writers as well. So I shared them as well. So it was a project which now is creating an impact all over Pakistan as well, because we created 400 to 500 jobs in tier 3 cities of Pakistan, giving a net MTS score of 55% for Daraz customers. Again, it saved our cost by 25% per package cost by 25%. Plus, the project, what project did with other as well. So now I told you, I was the only person as the head of logistics marketplace at that time. Now we have a now logistics marketplace has a team of 12 people who are looking after 52 partners all over Pakistan. So this is a very impactful project which I'm really proud of, and it is, and they are doing 12% of Daraz packages right now. So what Daraz packages are doing, so we have cut the business of 3PS because they were not giving us good services. We built a project under the name of Logistics Marketplace, and now it is one of the project which everyone, even Daraz, is marketing on their pages. So from somewhere where there was very much uncertainty about the project to something which Daraz is again promoting to 52 cities till now, and they will expand more in future. Great, Danish. Thank you so much for sharing your experience. Um, I'm sure it adds a lot of value, and I'm really happy to see the passion with which you were sharing. इसका मतलब एक experience बंदे को होता है कि done something you're proud of, and that is something that I could see. So अगर मैं reflection quickly करूँ in the interest of time, मैं आई थिंक आपने सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से शुरू में उसको सेपरेट की. यू गेव एक्चुअली टू एग्जांपल्स ऑफ Hmm. दिस एंड ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज ग्रेट. यू एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन. आई कुड ईजिली अंडरस्टैंड कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है. आई वाज लुकिंग एट कि अच्छा टीम कहाँ पर आती है और टीम कहाँ पे आपने लीड किया. आई कुड ईजिली फिगर दैट आउट जब आपने मेंशन किया कि आपने ट्रेनिंग दी, आपने किस तरह लोग अग्री नहीं कर रहे थे, आपने उनको अग्री करवाया, एंड हाउ दे आर ऑन अ रूट टू सक्सेस. दैट वाज ग्रेट. आई थिंक नंबर्स आपने जिस तरह मेंशन किए, दैट वाज वेरी वेरी किस तरह मैं बोलूँ, कैप्टिवेटिंग एक्चुअली, एंड दैट बिल्ट माई इंटरेस्ट. बिकॉज जब आप नंबर्स के ऊपर एकदम से आ जाते हैं ना, दैट मीन्स कि बंदे को बिजनेस का भी एक्यूमेन है, बंदे को अपने डिपार्टमेंट का भी पता है, और बंदा एज यू मूव अप द लैडर मैनेजरियल लीडरशिप पोजीशन पे जाते हैं तो आप नंबर्स में ही बात कर रहे होते हैं, आप ग्राउंड वर्क पे गाइड कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, बट आपको एक नंबर्स और एक ओवरऑल एक सेंस एक्यूमेन होता है, उसको देखा जाता है. दैट इज समथिंग विच इज़ ग्रेट. यू सर्व्ड ऑन ग्रेट पोजिशंस. ग्रेट है. एग्जाम्पल्स भी आपने वो शेयर की. अगर मैं आपको कुछ रेकमेंड कर सकूं, एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट वे टू एक्सप्लेन योर सिचुएशन, Sure, sure, दैट sure, वुड बी कि आई थिंक जो बिहेवियरल क्वेश्चंस को जिस तरह आंसर मैं जिस तरह करता हूँ ना, दैट इज आपने सिचुएशन समझाई, आपने बताया अच्छा यार ये एक प्रॉब्लम थी. सो फॉर एग्जांपल पीपल who were not part, who didn't have logistics experience, I had to get them and I had to get results out of them. So that situation is established. So you move to examples. Okay, what did you do? आपने एक दो एग्जांपल्स दी एंड देन यू मूव क्विकली टू द इम्पैक्ट. आई थिंक वो जो प्रोसेस है ना, फ्रॉम एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन टू द इम्पैक्ट दैट यू क्रिएटेड, दैट कुड हैव बीन शॉर्टेंड विद फ्यूअर एग्जांपल्स, और दैट कुड हैव बीन जिस तरह आपने जब इम्पैक्ट बता दिया ना, उसके बाद आप वापस इन द लास्ट पार्ट आप वापस उस तरफ गए कि अच्छा ये चीज़ थी और फिर ये था और ये सिचुएशन थी, देखें अब ये हो गया. So I think that could have been a bit different, but overall, I think I understood it pretty well. I think बीच में आपके it is very natural कि आप pauses बंदा लेता है, but जब आप एक flow में आ जाते हैं ना, so just try के एक answer करना within
मेरे माइंड में होता 3 4 मैक्स 5 मिनट्स, बंदा ना आंसर दे दे, सिचुएशन एक्शन एंड दिस इज माई इम्पैक्ट। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक इंटरव्यूअर है ना, वो पूरा दिन में उस अब हमारे यहाँ किस तरह होता है, आप एक हायरिंग मैनेजर को लेते हैं, लेट्स से हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसको आपने बोला यार ये आपने बंदा हायर करना है ना, ये 6 बंदे इंटरव्यू कर लें। अब वो अपना काम छोड़ के बैठेगा ना, अब उसके माइंड में काम भी चल रहा है, इंटरव्यू भी चल हम्म, रहा है। हम्म, वो ढूँढ रहा होता है यार मुझे कोई 2-3 चीज़ें ऐसी मिल जाएँ, बस मैं बोलूँ डन है, इतना ज़्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना। ट्रस्ट मी आधे से ज़्यादा लोग ये करते हैं व्हिच इज़ फाइन। तो वो अपने एक्सपीरियंस को देते हुए बोलता है यार मेरे माइंड को ये बंदा बस हिट कर दे। तो आपकी अगर मैं हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स फॉर एग्जांपल आप एक पोजीशन पे कर रहे हैं अप्लाई, तो मेरे माइंड में चलेगा यार इसने कॉस्ट की बात की है, इसने टीम की बात की है, इसने ग्राउंड अप एक चीज़ बनाई है और देखिए रिजल्ट्स आए हैं, दिस पर्सन नोज इज शिट, ये मेरे माइंड में आएगा। बट ये और बेहतर आ सकता है अगर आप उसको जो स्वीट आप डायरेक्ट इम्पैक्ट पे अगर आ जाए ना जल्दी, तो दैट वुड बी ग्रेट। दिस इज ये आई थिंक इंटरव्यूज और डिस्कशंस और उसके साथ आ जाता है। अभी भी अगर मैं कभी मेरे जैन में प्रमोशन हुई थी तो मैं उसका भी इंटरव्यू ऑफिस में हुआ था, तो जब मैंने दिया तो मेरे बॉस ने मुझे कॉल करके बोला यार रिपीट क्यों करे जा रहे थे, समझ आ गई थी। हम्म, मैंने कहा अच्छा बॉस, हालांकि मैं एचआर में हूँ, मैं सेशंस करता हूँ। देन आई रियलाइज यार अच्छा चीज़ें होती हैं, मे बी आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई डोंट गिव इंटरव्यूज, अल्लाह का हम्म, शुक्र की जॉब है। तो यू गेट आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। और कई दफ़ा अगर आपके कहीं इंटरव्यू हो ना कुछ हो, जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, अपनी वीडियो बनाएं और वीडियो वापस देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा यार कल मैंने ये चीज़ें नहीं करनी। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला यार स्माइल तो कर लो, ये इतना सीरियस होकर क्यों बात करते हो। अब मैं इतना ज़ोन में होता हूँ कि मेरे माइंड में भूल ही जाता हूँ यार स्माइल भी करना है, एक्सप्रेशन भी देना है। मैं कहता हूँ यार मुझे अपनी बात पूरी करनी है। हम्म, तो पैशन तो दिख रहा होता है बट शक्ल पे प्लेज़ेंट भी आप लगने चाहिए। दैट इज़ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वो। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो भी हूँ। थर्ड चीज़ मैं आपको कहूँगा, थोड़ा-सा व्हेनेवर वर्चुअली मैं बोल रहा हूँ, वैसे इन पर्सन तो वर्चुअली बैकग्राउंड जब भी इश्यूज। होता है, जस्ट मेक श्योर कि लाइट जो है ना आपके फेस पे प्रॉपर है। अम, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आपको वो रिजेक्ट कर देंगे और एंड में जाएँगे क्वालिटी पे, कॉम्पिटेंस पे ही जाएँगे। बट इट्स जस्ट अबाउट एन इम्प्रेशन, ऑप्टिक्स कि यार अच्छा चलो वो है। बाकी यार आई थिंक इट वाज़ ग्रेट द वे यू एक्सप्लेन्ड इट। मैं हमेशा आई एम अ पर्सन हू सेज यार सीवी हो, कुछ भी हो, नंबर्स में बात करो। क्योंकि बात आप जो भी हो ना, मतलब प्रोजेक्ट सब कर रहे होते हैं, आप पूरा दिन सुन रहे होते हो, बट बात बाद में पता है क्या रह गई? आपने 25% कॉस्ट कम हो गई थी, आपने ये बोला था। आपने उसकी बात की कि किस तरह वो कॉस्ट बंदा प्रोडक्ट ज़्यादा कमा रहा है। सीपीपी। ये चीज़ें माइंड में रह जाती हैं। So that's about it. If you have anything to say, if other Yeah, people have. I just volunteer just to give an idea to people as well, Hmm. because again, as I told you earlier, I have built big teams. I have hired lot of people within my team as well, and even for Dex as well. So I did an Daraz expansion hub expansion project when I was working for Daraz. So at that time, I hired people around 23 cities all over Pakistan. So I had that experience in interview taking experience as well. So this is a platform to at least give something to the newcomers and to add value to them to learn from us. You are an HR professional and I am core operations guy who Hmm. also take operational interviews. So if someone want to ask some sort of question, guys feel free to ask question and I will be there to answer it. By the way, I am also giving interviews in for global positions as well. So this is one of my practice as well. So it will help for my grooming as well. And again, a constructive feedback from Umar. Umar. जी, जी। Yeah. नहीं यार, तो आप आई आई थिंक आपकी जो द वे यू आंसर्ड उसी से आइडिया हो गया था आपके एक्सपीरियंस का एंड हाउ यू माशाल्लाह हाउ यू वर्क, बिकॉज़ मैं खुद एक टेक कंपनी में काम करता हूँ। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़। माय कंपनी ऑपरेट्स इन अ लॉट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान एंड इट्स नॉट ईज़ी। आपका तो स्केल भी लॉजिस्टिक्स का इज़ ह्यूज। So we are in 83 cities right now. So एंड Postex, अगर आप yes. उसके ऑप्स में हैं तो आपकी लाइफ कैसे गुजरती है, स्लाइट आइडिया है मुझे, बट आई एम श्योर आपको ही सबसे बेहतर Yeah, पता so होगा। so so honestly speaking, I played tactically because back in November 2022 we acquired Qualcomm. So we have a head of operation. So they at that time there were two head of logistics. One was from Call Korea and one was and one I was there. So I volunteered. I said, okay, I will look after excellence, operation excellence. I will be head of logistics
but I will take the role of operation excellence. So again, I look after operations, but I don't own operations. So I ask, I have the equal authority, I have the equal, I have dotted line reporting of all the head of operations reportees, but I am head of logistics. So at this I अच्छा. play technically. So this helped me a lot as well. नहीं नहीं, ग्रेट यार. एंड आई एम ग्लैड टू बी कनेक्टेड विद यू. इसी तरह फोरम में इसी तरह बातचीत So, हुई so जब. we will have a session, coffee session as well, if you are based in Karachi. नहीं नहीं, श्योर श्योर. आप इनफैक्ट जब भी टाइम हो आपका, we can connect later on. People, if you have any questions, obviously he's Danish is a technical guy, and he's speaking from that front, and he's hired a lot of people. So if you have any questions, relevant questions, feel free to ask. या हारिस, आप भी ज्वाइन कर लें. अच्छा, मुझे आई आई थॉट माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग. चले ठीक है, Yeah, it was दानिश इज. mine. या ग्रेट. सो पीपल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, दानिश जो वीडियो अभी रहेगी भी यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे भी होगी, ऑब्वियसली पीपल हु वॉच इट लेटर, फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स. आई एम श्योर दानिश विल आल्सो आंसर इट ओवर देयर. द बेस्ट पार्ट इज दैट the person who has gone through a lot of interviews, hiring a lot of people, उसके एक एक्सपोजर और उसका एक एक्सपीरियंस से जो आप सीख सकते हैं, दैट इज अनदर पार्ट. यू कैन आस्क relevant questions. um, so Sana is asking, sometimes isn't it good to repeat for emphasis? Sana, इंटरव्यू में, दानिश आप भी इस पर ऐड कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इंटरव्यू में ना यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट. सो अगर रिपीट आप कर रहे हैं जस्ट टू री एम्फसाइज द पॉइंट क्विकली एज अ समरी, दैट इज फाइन. बट इफ यू रिपीट द इंटायर थिंग, जो कि कभी कभी आप नर्वसनेस में करते हैं, मैं भी कर चुका हूँ, यू जस्ट थिंकिंग अब क्या बोलूँ, एंड देन यू लाइक अच्छा रिपीट कर दो. दिस हैपेंस, सबकॉन्शियसली होता है. लाइक अभी मैंने मेंशन किया कि व्हेन यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस तो ये चीज़ होती है. समरी के लिए तो ग्रेट यार, अच्छा है. दूसरे को आपने इतनी लंबी स्टोरी बताई, एंड में आपने एक समरी दे दी, दैट्स फाइन. इस पे दानिश अगर आप Acha, कुछ for कमेंट. Sana again, if you are giving a story and if you think at the end you need to emphasize on certain points which you think that will give a very strong impact over the interviewer, then you should repeat on, and you should only repeat those bullet points. So you should have those bullet points in your mind to re-emphasize what you have achieved actually. This really helps during the interview. Exactly. Greatly aptly put, Danish. Um, apart from this, ठीक है. Apart from this, if you have people who watch it later on as well, if you have any questions, feel free to add. I think behavioral interview से related जो ये answer था, that was a great answer overall, and I think you should learn from this. It's not easy. It takes experience. It takes a lot of experience जब आपको feel होता है, और जितना ज़्यादा आपको experience होता है उतना आप confident होते हो. So if you see Danish's body language is chill, he's calm. I know I've taken a lot of interviews, even though this is not a real interview, but people are just very nervous generally. क्या अच्छा क्या बोलूँ, ऐसी चीज़ ना बोल दूँ, ये ना बोल दूँ, वो ना बोल. So वो आपको experience exposure के साथ आता है. Practice it a lot. ठीक है, with that, Danish, thank you so much. I'll move on to Haris now for another question. Thank you so much. Let's Thank you, connect Umar. later on. Sure. I'm looking forward to it. Let's connect on ठीक. LinkedIn as well. Thank you Let's for have your a cup time. of coffee from me. Sure. Anytime. Let's connect. Sure. Thank you. जी, Hi. अस्सलाम वालेकुम हारिस, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक. How are you, Umar? How's I'm everything? I'm I'm good यार. Glad to be connected with you. थोड़ा सा Likewise. अगर अपने बारे में थोड़ा बता सकें, and then we can move on to the question. Okay, so I'm an experienced marketing manager based in Karachi. I've done my MBA in marketing from IBA. I've got around 15 years of experience in sales and marketing. And I've been associated with companies like Nestle, Bharat Telecom. I've been on both the client and the agency side. So I've been with Group M as well. And recently, I was working with a startup, Hilal Invest, as head of marketing.
So that's a bit about. Other than that, I like to travel, explore, and those are my hobbies. So I'm going to be interviewing for a marketing manager or a head of marketing position. Uh, Please fire away any questions. नहीं, great, Aris. Thank you so much. And with obviously with your education, with your experience, I would like to thank you to take that you have taken out time as a volunteer to help people. And My बहुत कम pleasure. लोग होते हैं जो वो अपने दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सपोर्ट के लिए भले थोड़ा सा टाइम हो, जितना भी टाइम हो, बट वो करते हैं टू ऐड वैल्यू. एंड यू नेवर नो, इवन इफ वन पर्सन लर्न समथिंग फ्रॉम हेयर, उसकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आता है, जो कि बिल्कुल आता है. आपको लगता ही नहीं आता. जब मैंने कोविड में स्टार्ट किया था, एंड आफ्टर दैट द randomly someday someone would comment and say, यार, you thank you so much, this has changed my life, because मैंने इसको कभी इस तरह सोचा नहीं था. तो True. यू फील गुड, यू जस्ट लाइक, यार अच्छा चलो मैंने अच्छा है हो दिया. सो मूविंग ऑन. सो मैंने इंट्रो के बारे में वी डिड अ मॉक सेशन, वी डिड दानिश के साथ बिहेवियर इंटरव्यू पे. विद यू Right. आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन है जो लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, लोग थोड़े स्टक हो जाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्यों इसका आंसर क्या देना, बिकॉज दे हैवंट थॉट अबाउट इट और दे आर नॉट श्योर. और मोस्टली पीपल आर लाइक, यार ओके, मैं तो जॉब के लिए आया था, इतना सोचा नहीं था. सो आई विल जंप स्ट्रेट टू इट. सो इमेजिन इफ यू इन एन इंटरव्यू एंड आस्क यू, Haris, why do you think we should hire you for this position, head of marketing position? Okay, so you should hire me basically because I'm one of the most experienced candidates around. I've been on both sides of the table, on the client side and on the agency side as well. So I know both perspectives. Other than that, I've been in sales. I've been in Nestle as an area sales manager. So I was on ground, so I know how the on ground FMCG sales works. So I have hands-on experience in that. I've been with the field sales force and all, and also I've been part of the brand strategy and brand launches as well, right? So I have a very good diverse experience of traditional marketing. I've explored almost all the areas, starting from brand activations to I've been a brand assistant brand manager as well at Warid. So I'm a good, you could say, package in the sense I've explored out of home advertising, I've explored ATL, BTL communication, I've explored content development, PR, and currently I'm developing my skills into digital marketing further. So I have some experience with social media management. At Hilal Invest, I explored paid advertising like Google ads, Facebook ads, all sorts of paid marketing. So I'm gradually building on to that. I'm currently exploring AI as well. So moving from traditional now towards the digital area. So overall, you could say I'm a good package, and I have the passion for marketing. I have the skills and I have the experience. So and I've led small teams from let's say 2 to 3 territory managers or executives or interns or senior managers and junior managers as well, to let's say a larger team consisting of around 80 people, with 30 being on one distribution, 50 being on the other. So I've got that experience of coaching, training, development as well. So काफी चीजें की हुई हैं मैंने. So that's why I feel I am a good candidate who has the experience, who has the contacts in the industry, who's interacted with a lot of people. So hence I'm presenting myself to you as a candidate. ठीक है, Haris, thank you so much. I think the best part about it was that the pleasant uh, nature of your answer and the pleasant environment that you created. I think वो Mhm. एक चीज़ है which is a learning for me as well. अभी मैं दानिश को ये बात बता रहा था कि you just get engrossed in the answer so much that आपका expression जो है ना बड़ा डल सा रह जाता है. बात सही कर रहे हो तो, but वो प्लेजेंटनेस जो है ना वो चली जाती है. सो दैट इज आई थिंक अ ग्रेट अ ट्रेट दैट यू हैव. आई थिंक यू मैंशनड, अगर मैं जल्दी से रिफ्लेक्ट कर लूँ उस पर, एंड दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एन एच आर प्रोफेशनल. ऑब्वियसली आपका एक एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, एंड
ओवरऑल इट वाज आई थिंक अ ग्रेट आंसर, बिकॉज आपने उस एस्पेक्ट को टच किया गया, आपकी स्ट्रेंथ क्या, यू टच्ड अपॉन कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि एज सीनियर पोजीशन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ पैकेज एंड नॉलेज और एक टेक्निकल एक्सपर्टीज। मैं उसको सोच रहा था कि आप कब टीम मैनेजमेंट पर आएंगे, बट वो भी आप आ गए, बिकॉज आप लीडरशिप पे यू ऑलवेज सी कि यार ओके लीडर है, कोच कर लेगा, क्राइसिस मैनेज कर लेगा, अडेप्टेबल है, टीम वर्क कर लेगा, दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑलवेज टॉक अबाउट। पर्सनल स्किल सेट की आपने बात की, अगर आप नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा वो, फॉर एग्जांपल यू मेंशन ब्रांड साइड, यू मेंशन सेल साइड, एंड इफ अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ फॉर अ वेरी सीनियर पोजीशन, इस पे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, इसके आप इस तरह मेंशन करते हैं जस्ट टू रिमाइंड द इंटरव्यूअर, यू नो आई हैव डन दिस because of my role, this percentage GMV got up, this was the impact on the bottom line in this role as a brand manager, you know, this was the Sure. If I and may, yeah. Mhm. sorry, if I may, interrupt. Just to add on to that, I can. One of the points which I could mention, if you are looking for numbers, is that while I was at Nestle, obviously it was a sales-based position. We had to achieve targets and all. So I had two distribution. One had the powder SKUs, Nido, Everyday, Cerelac, those sort of things, and the other had liquid SKUs. Like Everyday Liquid and Nestle Fruta Vital Juices, stuff like that. So basically, what I explored in my area, that the powder SKUs Nido Everyday, our area had a very good cutting of that, or like offtake of that, but it was difficult to increase the that tonnage, and I tried to grow that, but I was facing some challenges over there. So I looked at the liquid portfolio. I had two advantages in my area. I felt that our chillers were underutilized, the fridges on our shops. So I started to capitalize on that, and I built on the. I started to ensure that our highest selling SKUs were kept in the summer peak time in our chillers, like red grape nectar and mango chonsa nectar. So those had great cutting. So due to that, the offtake used to be quite fast, and basically we got repeat orders due to that. And this was one area which I started improving on. Other than that, I also identified that our area, Korangi, had Ibrahim Hadri market, and there was it was connected to the sea, so a lot of fishermen used to go on boating trips, and they used to go for days for fishing and all. So they used to take everyday liquid tea whitener with them. So I started loading the shops over there with everyday tea whitener, and I greatly increased that sales. Everyday tea whitener got like 300% or 400% increase in that, and overall, based on these initiatives which I took over a period of 2 to 3 years, when I left, my liquid volume was like 200% of when I started. So if we started with 300,000 liters, so we ended up around 600, 700,000 liters in that. So that is one example I can give you. There are, since my career span has been long, I can give Mhm. you various examples based नहीं, on any area. that's great, but जब वो उसमें आप a summarized version of this, and completely agree the way you mentioned it, और अगर उसका एक summarized version while you're explaining why the person should hire you, this is again like an elevator pitch, and Mhm. again if कभी कभी ये होता है, हर कंपनी की जेडी भी डिफरेंट होती है, हेड ऑफ मार्केटिंग की, एंड Of course. समटाइम्स कंपनी के P&L पे भी मैटर करता है कि उस वक्त मार्केटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। कुछ कंपनी से मार्केटिंग एक सपोर्ट फंक्शन की तरह ही होता है, कुछ कंपनी से मार्केटिंग एक ग्रोथ फंक्शन होता है, कि Right. कुछ कंपनी से मार्केटिंग P&L पूरा लेके चलता है एक ब्रांड का। सो इट Mhm. डिपेंड्स कि व्हाट द कंपनी वांट्स, ऑब्वियसली उस पर आप रिसर्च कर लें पहले, एंड यू नो कि व्हाट द हेड ऑफ मार्केटिंग का प्रोबेबली एक बहुत सीनियर को CEO कर रहा होगा, या हेड ऑफ Mhm. डायरेक्टर HR देख रहा होगा। सो उस पे अगर आप टच कर लें, बट येस ओवरऑल अगेन a great answer. If anyone has any comment over here, or agar after the video ends, this video will be stored on LinkedIn and YouTube. If you have any comment, feel free to reach out. I'm sure Haris will be kind enough to answer relevant questions over there as well. Of course. And
Okay, so Tyson Kidd has well, refer to your point. Tell numbers during interview. How can a bank officer can relate to this? Haris, if you want to jump in, I can obviously answer this. But with your experience, if you also want to answer this, you can touch upon it. Uh, So Sorry, the question is basically, can you repeat the question, the please? question is, how can a bank officer talk in numbers during an interview? It's a In generic question. कि numbers में कैसे बात करें अगर बैंक में कोई interview दे रहे हैं? I think it would depend on the person's role, what positions he has been occupying and what KPIs he has helped achieved. So based on that, you definitely can, whatever was your target given by your, management to you, you can definitely refer to those numbers. Yeah, You, and any just to add, just to build to it, any KPI that you have, उसमें आपके कुछ तो नंबर कुछ तो टारगेट होगा अगर क्वांटिटेटिव नहीं है तो क्वालिटेटिव होगा जस्ट टच अपॉन दैट बैंकिंग हो टेक हो एनर्जी हो जो भी हो बट आपके डिपार्टमेंट वाइज आपके कोई टास्क होते हैं आपके टारगेट्स होते हैं साल के सेल्स में थोड़े ऑब्वियसली न्यूमेरिक क्वांटिटेटिव ज़्यादा होते हैं दूसरा में क्वालिटेटिव हो सकते हैं यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट द पॉइंट इज यू हैव टू बी क्विक एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर थैंक यू मलिहा for highlighting this and for thanking Haris. Malia has joined us all the way from Thailand. So thank you so much. So, Mike, you to leave, right? Thank you so much for giving me this opportunity to interact, and I would love to meet you in person as well, whenever you have Sure, time. Haris. Let's connect, inshallah. Jab bhi, let's keep in touch. And thank you so much for taking out time because I know with work it is very difficult. Plus, you're here to add value to the people who are listening. So thank you so much once again. Let's Pleasure, connect. pleasure. Yeah. ठीक है, Thank you. thank you. Allah Hafiz. Take care. Bye. ठीक है, so those were the answers related to typical questions that you have in an interview. Um, you're welcome, Habib. I think इस पे जितना आप प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आप अच्छे होंगे. कोई चीता नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता चीता आंसर करने में. It is difficult when you're put on the spot and you're asked questions, but the difference is if you know your stuff and you have exposure and if you're well prepared, तो आप हमेशा ड्राइविंग सीट पे होंगे इंटरव्यू पे. आपसे देखें इंटरव्यू कभी गलत अनफेयर चीज़ कम ही करते हैं, बहुत कम होता है. मोस्टली दे आर ऑल्सो लुकिंग ना वो अपना टाइम क्यों लगाएंगे. इतने फारिग तो नहीं है ना कि वो बस बैठ के बोलेंगे अच्छा चलो आज इंटरव्यू करते हैं किसी को तंग करते हैं. ऐसा तो नहीं है ना. बट they are looking for passion, they are looking for energy, they are looking for someone who is directly relevant to what they require. ठीक है, तो आप उनको शो करें ना कि मैं हूँ रेलेवेंट. अगर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप मिस आउट कर रहे हैं चीज़ें एंड यू नॉट एबल टू एक्सप्रेस, यू नॉट एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन, तो वो दूसरा बंदा भी विल बी कंफ्यूज्ड कि वो और भी इंटरव्यूज दे रहा है. ठीक है, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द सेशन. इट्स 11:30 ऑलरेडी. आई ऑल्सो हैव वर्क एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव वर्क. मैं सिर्फ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देख लूँ if I've missed any. Okay, so Tareem has a question. Doing MSc in digital marketing coming from MMU, having a different education background, to how to seek into digital marketing. देखें Tareem's best part is you're studying, your relevant expertise will be in digital marketing, so obviously you can apply. मैं you can check relevant videos on my channel. मैं एक उसमें वीडियो है मैजिक 6 के ऊपर, क्योंकि ये इतनी दफ़ा क्वेश्चन आया है. ऑब्वियसली हर बंदा एंड में व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस कि आपको जॉब सही मिल जाए. मैजिक 6 मैं बोलता हूँ, आपका रेज्यूमे, आपकी टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स, आपका इंटरव्यू, आपका बीइंग कल्चरल फिट, ठीक है, आपकी नेटवर्किंग और आपकी ब्रांडिंग, ये चीज़ें हैं जो आपको जॉब दिलाती हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. सो इंटरव्यू तो आप अच्छा कर लेंगे, बट उससे पहले की जो कहानी है इंटरव्यू तक पहुंचना, और फिर इंटरव्यू में जब पहुंच जाएं कैसे पहुंचना है, उसमें नेटवर्किंग भी आती है, आपकी ब्रांडिंग भी आती है, a lot of things. So you need to be a complete package. आप ये नहीं कह सकते कि बस इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू भी कैसा दिया है, अच्छा दिया है नहीं दिया है. अब आप अगर you know, I know a lot of people who apply in the same company, they apply to 20 positions and they say हमें कॉल क्यों नहीं आई. अब आप अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अप्लाई करो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अप्लाई करो. आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हो उस कंपनी में बिकॉज वो उनको लगता है कि यार ये बंदा खुद छोड़ नहीं है कि इसको करना क्या है. सो आई अंडरस्टैंड जॉब चाहिए,
बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड पर्टिकुलर. आपकी नेटवर्किंग देखें, जो पबा होता है ना, कोई भी कंपनी में एक लिमिट तक चलता है, सोर्स जिसको बोलते हैं. बिकॉज नो मैनेजर वांट्स अ पर्सन जो काम ना करे. मैनेजर क्या करता है, वो कहता है भाई मुझे टीम बंदा ऐसा चाहिए जो सपोर्ट करे. रेफरेंस पूरी दुनिया में चलती है. रेफरेंस आप भी करते हैं जब आप घर में कोई पेंटर बुलाते हैं, कोई ड्राइवर रखते हैं, कोई कुक रखते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई फ़ोन लेते हैं, कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं. दुनिया के कोई भी काम करते हैं, आप पहले मशवरा करते हैं. रेफरेंस का मतलब है मशवरा. मशवरा आप करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई ये काम इसने किया था आपके यहाँ था, कैसा था वो. और हर बंदा चाहेगा, देखें किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके 10,000 एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू करे. वो मशवरा करते हैं, यार आप बता दो कोई है जानने वाला. तो वो जानने वाले का मतलब होता है किसी के साथ में काम किए और उसकी कॉम्पिटेंस अच्छी है. सो बिल्ड दैट, बिकॉज वो चीज़ आपको इंटरव्यू तक लेके जाएगी. अच्छा, तूबा का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एलैबोरेट वन सिचुएशन व्हिच यू आर रनिंग shift on maximum utilization of resources and now you have order to fulfill and then what would you do? Elaborate one in which you are running shift on maximum. अच्छा, सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आप मैक्सिमम पे काम कर रहे हैं और आपको एक और काम दे दिया गया. देखें, तो वह डिपेंड करता है आपके मैनेजर कैसा. इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड फर्स्ट आस्क एंड आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू माय मैनेजर कि यार ये एक सिचुएशन है एंड दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी. बट आई विल नीड टू बी कॉन्फिडेंट, आई नीड टू बी दैट कॉन्फिडेंट फर्स्ट के मैं सच बोल रहा हूँ. और ऐसा तो नहीं कि माय मैनेजर विल थिंक यार ये काम से भाग रहा है. बट अज्यूमिंग दैट दैट इज नॉट द केस एंड एक्चुअली मैक्सिमम उस पर आप कर रहे हो, then you'll have to switch gears. अगर time sensitive और critical एक चीज़ है and this is the nature of the job, then you have to shift gears and you have to get it done. But you also need to align with your manager कि this is something which is a stretch target and this is not the main target. एक stretch हुआ ना कि एक बंदे की maximum utilization जितनी हो सकती है. बट ये पता है, ये बड़ी वेग टर्म है maximum utilization. You need to be very sure कि वो maximum है या नहीं है. मैं एचआर में काम करता हूँ. लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी एंड से यार हम अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, हम शॉर्ट हैं रिसोर्सेज पे और हम बस दिन 16 घंटे काम कर रहे हैं. आई हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव डन वर्कलोड एनालिसिस. मैंने पूरा उनका टास्क रिलेटेड और पूरा वो निकाला है एंड आई हैव मैंने पूरा एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू मैं एक एस्टिमेट लगाता हूँ कि पर मंथ अगर 180 घंटे हैं तो 180 घंटे में से कितने घंटे इसके हैं, प्लस माइनस 10% कर लें एरर. उसमें बहुत लोगों को पता चलता है नहीं यार एक्चुअली इतना नहीं है, मे बी हम इधर टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, टाइम लेट शुरू करते हैं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम अपना मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं, टाइम निकल आता है. सो यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पार्ट. ठीक है, ठीक है. विद दैट आई लेट इट बी. मैं कल जो इस पे कमेंट्स क्वेश्चंस आए होंगे आई विल डेफिनेटली आंसर दैट. थैंक यू वंस अगेन टू Haris, Danish and Junaid. I think they were wonderful sport and thank you so much. Let's connect later. I'll be posting videos on interview skills. Next week it's job fair. अपने किसी को अगर आप इंटरव्यू में स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जॉब पे स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, मेक इट अ पॉइंट दैट यू टैग देम एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू लेट देम नो टू गो थ्रू इट. और इससे ज़्यादा प्रिसाइज और इससे ज़्यादा डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं हो सकता. हेल्प करें दूसरों की. ट्राई टू टेक आउट 5-10 minutes every day or 30 minutes. Just try to help people. You will feel good. And इसके अलावा I've been posting videos on I've been inviting people. I've been asking them interview skills, resume writing. Guys, start working on it and build a brand for yourself. ठीक है, and let me know if you want any other sessions, particular sessions or specific topics that you feel जिस पे आप struggle करते हैं. ठीक है, that thank you so much. Until next time, let's uplift.